To say that saving the earth is the need of hour would be an understatement. All the activities of humans, driven by greed and selfishness, have caused immense damage to the earth. It is degraded, it beyond repair. Almost all the natural resources are now polluted due to human activities. Hello everyone, I am Rekha Shoran, teaching environmental science in KM Public School. Today, I am here to present my views on National Pollution Control Day. India observes National Pollution Control Day on 2nd December in the memory of people who lost their lives in Bhopal gas disaster. The industrial accident occurred in 1984 when the gas methyl isocyanate leaked on the night of 2nd December and killed thousands of people. The effects of that disaster are felt even now after more than 37 years. The main objectives of the day are to spread awareness on managing and controlling industrial disasters, prevent the pollution produced by industrial processes, and also by awareing to people about prevention of environmental pollution. The theme of National Pollution Control Day 2021 is like any other years, that is, raise awareness about the importance of pollution control and educate people on how to prevent pollution. It is very difficult to tackle and handle the situation of pollution when there is a big effect of pollution on environment. The National Health Portal of India data reveals that about 7 million people die every year due to air pollution. The data also reveals that 9 out of 10 people globally do not have access to clean and safe air. As many as 9 Indian cities are on the list of most polluted cities in the world, with level of particulate matter exceeding 200 in some places. Delhi's air quality is in the upper end of the very poor category, while pollution level entered the severe zone in the neighboring cities of Ghaziabad, Greater Noida, Gurugram, Faridabad also. To make the world a better place, we must have proper information related to the pollution index of our country, and we must also take into consideration some practices that will help us to control the pollution that we are emitting in our ecosystem day by day. Every people need to cultivate a better attitude towards reducing pollution from the environment in various ways, like busting of crackers should be banned, use vehicles at the time of need only, plant more and more trees. Everyone should adopt 5R rule, that is, refuse, reduce, reuse, repurpose, and recycle. Our earth is the only planet which sustains life. We do not have another planet which we can move on to. This makes it all the more serious to control the pollution and save our lives. If we do not take strict actions now, we'll lose the chance of seeing our future generations flourish forever. Everyone must come together for the same cause, as we are inhabitants of this planet firstly, and then anything else. Thank you so much. सब्जी ले लो, सब्जी ताजा ताजा सब्जी, सब्जी ले लो। ये गाजर क्या भाव है? 20 रुपए किलो। आधा किलो पैक कर दीजिए। और ये सेब 2 किलो। 2 किलो लो। बंद करो, बंद करो, प्लास्टिक का प्रयोग बंद करो। बहन जी, आप हर रोज यह तख्ती लेकर मेरे ठेले पर क्यों आ जाती हो? सब्जी वाली, मैं ये प्लास्टिक का प्रदूषण, प्लास्टिक कितना नुकसानदायक होता है, मैं ये बताने के लिए तख्ती लेकर आती हूँ। क्या तुम प्लास्टिक के नुकसान नहीं जानती? नहीं।
प्लास्टिक से जो धुआं जब प्लास्टिक जलता है तो उससे जो धुआं निकलता है वो हमारे पर्यावरण को दूषित करता है, हमारी हवा को दूषित करता है वो, और इसे हजारों साल लगते हैं गलने में यानी डिकम्पोज होने में। इससे जानवरों को, इंसानों को और जल में रहने वाले यानी समुद्रों में रहने वाले जीव जंतुओं को भी नुकसान होता है। जिस प्रकार अगर हम इनका प्रयोग तो कर लेते हैं इन प्लास्टिक की थैलियों का, फिर हम इन्हें कूड़ेदान में फेंक देते हैं। जिस प्रकार गाय क्या करती है, गाय जैसे पशु चारा समझ के इन्हें खा लेते हैं और फिर इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन पूरी तरह डैमेज हो जाता है, खराब हो जाता है और इसके कारण कभी कभी उनकी मृत्यु हो जाती है। इसीलिए हमें प्लास्टिक का प्रयोग कम से कम करना चाहिए और हमें घर पे बनी थैली का ही प्रयोग करना चाहिए। आगे से मैं अब कपड़ों की थैलियों का ही यूज करूंगी, इस्तेमाल करूंगी। ये रही थैली। आप सभी से यह अनुरोध है कि आप सब घर पर बनी कपड़े की थैली का इस्तेमाल करें और प्लास्टिक का कम से कम प्रयोग करें। धन्यवाद। Hey friends, my name is Nishika. Let's start. Plastic bags are hazards and pollution land air. Many animals eat plastic mistakenly and they die immediately. Oh, so very dirty. Thanks. Save the earth. Happy Diwali, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, सेम टू यू। दीदी हमारी दिवाली पे हमारे पास फूलझड़ी है। फूलझड़ी? हाँ, फूलझड़ी। पर बच्चों, फूलझड़ी जलाने से तो प्रदूषण फैलता है। फिर हमको क्या बचाना? वैसे तो हमें पटाखे जलाने ही नहीं चाहिए, पर आप बच्चे हो तो मैं आपके लिए एक चीज लेके आई हूँ। ये क्या है? इसे बोलते हैं पॉप-पॉप और ये भारत में ही बनाया गया है, ठीक है। और जब हम इसको ऐसे बजाते हैं ना तो ना इससे धुआं फैलता है, ना ही इससे प्रदूषण होता है और ना ही इसके बजाने से हमें शोर होता है, ठीक है। और ये पटाखे भी है, ठीक है। तब आप जाओ और इन पटाखों को बजाओ और अपनी दिवाली मनाओ। ठीक है दीदी। तो आप सबको भी फूलझड़ी छोड़कर ये पटाखे अपनाने चाहिए। Hello everyone, my name is Sakshi from class 8B in KM Public School, Bhiwani. Today I am giving a speech on National Pollution Control Day. National Pollution Control Day is observed on December 2 to instill the awareness among the people about environmental pollution and its disastrous consequences. The National Pollution Control Day is observed every year on this day in remembrance of those who lost their lives in Bhopal gas tragedy when the deadly gas methyl isocyanate leaked out of the Union Carbide plant on the intervening night of December 2 in 1984. The effect of that disaster are felt even now after more than 35 years. The key objectives are to educate people about the importance of pollution control acts and making them aware about industrial disasters. The National Health Portal of India data reveals that around 7 million people are die every year due to air pollution. Let us save our environment from getting poisoned with pollution. Let us create more awareness on this National Pollution Control Day. Thank you. नमस्कार, मैं हिमानी आज आपके सामने एक प्रदूषण के ऊपर कविता सुनाने जा रही हूँ। प्रदूषण एक बीमारी है, प्रदूषण एक बीमारी है जिसकी चपेट में आई दुनिया सारी है, जिसकी चपेट में आई दुनिया सारी है। वक्त रहते न सुधरे हम, वक्त रहते न सुधरे हम, तो होनी घनघोर तबाही है, तो होनी घनघोर तबाही है। धन्यवाद। Earth provides enough to satisfy every man's needs, but not every man's greeds. Hello everyone, I am Jiten Kaushik of class 6th A. Today I will tell you each and everything about National Pollution Control Day on December 2nd. India observes National Pollution Control Day on December 2nd in the memory of the people who lost their lives in the Bhopal gas tragedy, which occurred on December 2nd, 1984. The industrial accident occurred in 1984 when the gas
methyl isocyanate leaked and killed thousands. The key objectives are to educate people about the importance of Pollution Control Act and making them aware about industrial disaster. The day aims to bring awareness to people about prevention of air, soil, noise and water pollution.